Good morning, class third. Class is English language, and we have started our fourth chapter, pronouns. What is the chapter name? Pronouns. So, class, yesterday in this chapter you have learned about pronouns. That what is a pronoun? Pronoun is a word that we use at the place of a noun to avoid repetition. Okay, a word which can replace a noun word. Noun word means name of place, person, things, and animals, a naming words. Okay, so a word which can replace a noun word is called pronoun. And also you have learned about singular pronouns and plural pronouns. We use singular pronoun with singular noun word and plural pronoun with plural nouns word. Okay, so yesterday you have completed question number A, and question number B is also completed, and you also have understood about personal pronouns. Okay, about speaker, listener, or spoken about. That whoever is speaking is called a speaker, just like I am telling to you something, so I am a speaker. You are listening my words, so you are listener. And I am telling something about you, about pronoun, so it is spoken about. Okay, so this is called personal pronoun. So the next topic is question number C. In this question, complete the sentence with him, her, it, or them. Class, here in this question, you have to complete these sentences by using these pronouns word. So the first one is I don't drink colas. I don't like it. Okay, here in number first you will write it. Okay, and it is used for colas. Okay, मैं ड्रिंक कोलास, मैं कोला नहीं पीती हूँ, ठीक ना? क्यों? क्योंकि मुझको वो पसंद नहीं है. So it is used for colas. Next, I don't know that woman. Do you know her? So here in number second you will fill her, and her is used for that woman. Okay, I don't know that woman. मैं उस और woman को नहीं जानती हूँ. Do you know her? क्या तुम उसको जानते हो? So her is used for woman. Okay. Next, this shirt isn't very warm. I do not wear it in winter. So here in number third you will fill it. Okay, and it is used for the shirt. Okay, this shirt is not very warm. ये जो शर्ट है वो ज़्यादा गर्म नहीं है. I do not wear it in winter. मैं उस शर्ट को उसको ठंड में नहीं पहनता हूँ, विंटर में नहीं पहनता हूँ. Clear? Next, this is my friend Rishi. Have you met him earlier? So here in number fourth you will fill him, and him is used for Rishi. Okay, this is my friend Rishi. ये मेरा दोस्त है Rishi. Have you met him earlier? क्या तुम उससे पहले मिले हो? So here in number fourth you will fill him. Next, Dad forgot the keys at home. Can you give dash to dash? Can you give them to him? So here firstly we will fill them. Them is used for keys. Keys are in plural form, so here you will write them. If there is only one key, so you will write it. यहाँ पे अगर केवल वन की होती तो हम इट राइट करते, क्योंकि कीज है, प्लूरल फॉर्म है, सो हम देम राइट करेंगे. एंड हिम इज यूज्ड फॉर द फादर, द डैड. ओके, कैन यू गिव देम टू हिम? क्या तुम उस चाबियों को पापा को, डैड को दे दोगे? सो क्लियर क्लास, हाउ टू दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट थिंग इज some pronouns show belonging or possession. First is personal pronoun, that whenever we are talking about any person, place, animal or thing. Okay, so this is called personal pronoun. This second number is possession. Okay, so some pronouns show belonging or possession. कुछ ऐसे pronoun होते हैं जिससे हमको किसी की belonging, ऐसा अधिकार जताते हैं ना, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये मेरी बुक है, ये तुम्हारी बुक है, ये इसकी है, वो उसकी है, तो अधिकार जताते हैं ना, belonging, possession. So some pronouns also show that. We use mine and ours to talk about things that belong to us. Whenever we are talking about our belonging or our things, we use mine and ours. जब कभी भी हम अपने किसी भी चीज़ का अधिकार जताते हैं ना, कि मेरा है, हमारा है, तो हम
माइन और आर्ट्स का यूज़ करते हैं। द स्टोरी बुक इज़ माइन, जो स्टोरी बुक है वो मेरी है। माइन मीन्स मेरी, हम अपना अधिकार जता रहे हैं ना कि मेरी है, तुम्हारी नहीं है, मेरी है, सोच लो, लेना नहीं। सेकेंड इज द ब्रिक हाउस इज आर्स, जो ब्रिक हाउस है जो दिख रहा है सामने वो मेरा है, हमारा है। आर्स मीन्स हमारा है, तो अधिकार जता रहे हैं ना कि मेरा है, हमारा है, तुम्हारा नहीं है, सोच लो। सेकेंड इज वी यूज योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग्स टू अदर। ओके, whenever we are talking about anything that belong to others, we use yours, hers, his and theirs. Okay, yours for you, hers for she, his for boy, hers for girl and his for boy and theirs for plural person. Okay, that pen belongs to Anita, it is hers. दैट पेन, जो पेन है वो किसका है, अनीता का है, ठीक ना। इट इज़ हर्स, ये उसका है। ओके, सो गर्ल है तो हम हर्स यूज़ करेंगे जब अधिकार जताना कि गर्ल का सामान है, ठीक ना, किसी भी गर्ल का हो, चाहे मम्मी का, सिस्टर का, मैम का, दोस्त का, किसी का भी होगी। गर्ल है अगर तो हम हर्स, और अगर बॉय है तो हिज, ठीक। तो इस तरह से हम पोजेशन और बिलोंगिंग प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक ना। So now come to the question number D. Look at the pictures and fill in the blanks with the correct pronouns. Class, here in this question there are some sentences. We have to complete them by using the correct possessive pronouns word. Okay, this is called possessive pronouns. Okay, so the first is Ajay asked Sonia, are these fish yours? Okay, are these fish yours? अजय आस्क्ड सोनिया, अजय ने सोनिया से पूछा, क्या पूछा, आर दीज फिश योर्स, क्या ये जो फिशेज हैं क्या ये तुम्हारी हैं। ओके, सो तुम्हारी, योर्स, हियर विल राइट योर्स। ओके, नेक्स्ट द किटन इज हर्स। ओके, हियर इन नंबर सेकेंड यू विल राइट हर्स। नेक्स्ट कार्तिक आस्क्ड पुनीत, इज दिस बॉल योर्स। ओके, कार्तिक पुनीत से पूछा, क्या पूछा, इज दिस बॉल योर्स, क्या ये बॉल तुम्हारी है। नेक्स्ट अब्दुल सेड, दिस पैरट इज माइन, माइन मीन्स माई सेल्फ। ओके, अपने लिए। अब्दुल सेड, अब्दुल ने कहा, क्या कहा, दिस पैरट इज माइन, ये पैरट मेरा है। नेक्स्ट द नॉटी पप्पी इज देयर्स। ओके, देयर्स मीन्स उनके। ओके ना, जब होता है ना बताते हैं कि उनके हैं, इनके हैं, तो हम देयर्स का यूज़ करते हैं। जो नॉटी पप्पी किनका है, उनके हैं, ठीक ना। सो हियर दैट्स हाउ विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई। Rewrite the following sentences replacing the underlined words with pronouns. Class, here in this question there are some sentences, okay, and also there are some underlined pronouns, underlined nouns word. We have to replace that nouns word with pronouns. क्लास क्या करना है, इन सेंटेंसेस में कुछ आपके नाउन वर्ड अंडरलाइन है, उस नाउन वर्ड की जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा हमको वो करेक्ट करके फिर से सेंटेंस को सही से लिखना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज शीबा इज सैड, शीबा विल लीव सून, शीबा हैज़ टू गो टू दिल्ली। सो हियर यू कैन सी अंडरलाइन वर्ड्स इज शीबा एंड शीबा इज a girl, so which pronoun we use? We use she. Okay, Shiva is sad, she will leave soon, she has to go to Delhi. Okay, next is Ankur bought a fountain pen, Ankur gave the fountain pen to Aisha, Aisha loved the fountain pen. So here you can see that there are two words which are underlined. First is Ankur, Ankur is a boy, so we use he. Fountain pen, it's a thing name, so we use it. And Aisha also, so Aisha is a girl, so we use she. Okay, and again fountain pen, so it. So ready? So the sentence will be Ankur bought a fountain pen, he gave it to Aisha. Okay, he gave it to Aisha, she loved it, she loved it. So clear class, how to do this question? Next, third number, Pooja and I went to watch a movie.
Pooja and I liked the movie a lot. So firstly you can say Pooja and I. So we use here we. There are two person including me. अगर हम भी उसमें शामिल हैं तो हम वी का यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पे आई की जगह कोई और नेम होता तो हम दे यूज़ करते हैं, लेकिन आई है तो आई अगर है तो हम वी का यूज़ करेंगे. ओके, सो वी लाइक्ड द मूवी. मूवी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे. वी लाइक्ड इट अ लॉट. पूजा एंड आई वेंट टू वॉच अ मूवी. वी लाइक्ड इट अ लॉट. नेक्स्ट, Ravi and Rita went to a library. Ravi and Rita greeted the librarian. So here underlined words are Ravi and Rita. They are two person, so you will use they. Ravi and Rita went to a library. They greeted the librarian. Next, the children went to the zoo. The children ate ice cream. The children relished the ice cream. So here there are two underlined words. First is the children. So we use they. Okay, children means plural form. So we use they at the place of children. And for ice cream we use it. The children went to the zoo. They ate ice cream. They relished it. Relished means enjoyed. Okay. Next, Jay had a birthday party. Jay got a lot of gifts. Jay liked the puzzle the best. The puzzle had 8 pieces. So here again there are two underlined words. First is Jay. So Jay is a boy name, so we use he. And next thing is the puzzle. Puzzle is a game, non-living thing, so we use it. So the sentence will be, Jay had a birthday party. He got a lot of gifts. He liked the puzzle the best. It had 8 pieces. So clear class? How to this question? So class here, chapter 4th, pronouns totally completed. Hope you all understood well about all these things. Okay, so it's enough for the day. Thank you.